Good morning, students. Next example regarding probabilities. A card is drawn from a well-shuffled pack of cards. Calculate the probability for the card to be a queen, and second is a queen of heart. First probability calculate करनी है कि अपन पैक ऑफ कार्ड चो जो ड्रा करना है कार्ड वो क्यून होवे, दूजा हैगा क्यून ऑफ हार्ट होवे specifically. And therefore for the first case there are 4 queens in the pack of card. Therefore the number of cases in which the card will be a queen, that is the number of ways the event may occur, is equal to m equal to 4, and the total number of equally likely ways equal to the total number of cards 52. Therefore the probability of card to be a queen is equal to 4/52, that is 1/30. And in this second case the card drawn should be queen of heart. So there is only one queen of heart. There is only one queen of heart in the pack. So here m is equal to 1. Therefore the probability for the card to be a queen of heart is equal to m upon n is equal to 1/52. Next is calculate the probability of getting any card of heart from a deck of 52 cards. तो एनी कार्ड ऑफ हार्ट, जहाँ पर क्यून नहीं मेंशन की या कुछ नहीं मेंशन किया, हार्ट का कोई भी कार्ड, द टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इक्वल टू 52 एंड द नंबर ऑफ कार्ड्स ऑफ हार्ट्स इज इक्वल टू कितने हैं 13. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी कार्ड ऑफ हार्ट फ्रॉम द डेक ऑफ कार्ड इज इक्वल टू कितना आएगा 13/52, दैट इज simplify further. If you simplify it further, it will be 1/4. Next is addition theorem on probabilities. We will discuss only for the first one, that is for mutually exclusive events. If two events A and B are mutually exclusive, the probability of the occurrence of either event E or B is the sum of the individual probabilities of event A and B. That is the probability of occurrence of either event. Exclusive तो ही clear है कि if one happens another don't happen. It is equal to probability of two mutually exclusive events is equal to probability of the first event plus the probability of a second event. It is called as the addition theorem on probability. ठीक है. So and the second case we will discuss is equal to here on multiplication theorem on probabilities. We will discuss only the independent events. Let A and B are two independent events. The probability of both the events to occur is equal to the product of the probabilities of the individual events. That is, the probability of two independent events is equal to the probability of first event multiplied by the probability of the second event. This is called as the multiplication theorem on probabilities. So leave the rest of this topic. Next go to our next topic is परसेंटेज डेविएशन और फ्लक्चुएशन. फ्लक्चुएशन का मतलब मेन पोजीशन तो या मेन टारगेट तो भटकना, डेविएशन डेविएट करना,
सेम है दोनों का मीनिंग, ठीक है। ए पी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू अकर इन ईच ट्रायल, then the expected number of times the event may occur in n trial is equal to expected frequency n trial ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ n into capital P। ਜੇ P ਇੱਕ ਦੀ probability ਹੈ ਇੱਕ event ਦੀ, ਤੇ ਜੇ n time happen ਹੁੰਦਾ ਤੇ probability of happening is equal to n into P। if the event actually occurs n times, capital N times, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਐਨ ਪੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ ਜੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਅਤੇ ਐਨ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਅਕਰੈਂਸ ਆਫਟਰ ਦੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਓਵਰ। then the percentage deviation of fluctuation is equal to what, n minus np upon np। ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਐਨ ਪੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਐਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਐਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਐਨ ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ ਐਨ ਪੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਲੈਣਾ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 100। ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ਸ ਐਟ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਾਇਲਸ ਐਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ। ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਐਜ਼ ਐਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ਸ। ਨੈਕਸਟ, a pair of 6-faced dice are thrown simultaneously, but the probability that both of them have their face 2 up। तो number of possible events, total face किन्ने हैं ਉਹਦੇ, ਇੱਕ ਡਾਇਸ ਦੇ 6 ਹੈ, ਤੇ ਫੇਸ 2 ਅਪ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸ 2 ਹੀ ਅਪ ਆਵੇ। तो लेटर केस the case of first dice, probability of first dice falling with its phase 2 up is equal to 1.6। similarly the second dice falling with its phase 2 up is equal to 1.6, and the probability of both the dice falling with their phase 2 up is equal to, these are the independent events, therefore the probabilities will multiply, that is 1.6 into 1.6 equal to 1.36। Next, calculate the probability of drawing 2 queens in succession from the pack of cards। succession मतलब ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਡਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 52, ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਵੈਂਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੈਨ ਹੈਪਨ ਫਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 4 ਕਿਊਨਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਡਰਾਇੰਗ ਅ ਕਿਊਨ ਇਨ ਦੀ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4.52 ਆਏਗਾ, 1.13 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਕਿਊਨ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਡਸ ਬਚੇ ਆ ਹੁਣ 51, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਿਊਨਸ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਚੀਆਂ, 3 ਬਚੀਆਂ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਰਡ ਟੂ ਬੀ ਅ ਕਿਊਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ, 3.51, that is 1.17। therefore the probability of drawing 2 queens in succession is equal to 1.13 multiplied by 1.17 is equal to 1.221। next case, 36 dice are thrown simultaneously, how many of these shall show the face 2 up। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੇਸ 2 ਅਪ ਸ਼ੋ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ 36 ਡਾਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਾਇਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 36 ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਅ ਸਿੰਗਲ ਡਾਇਸ ਟੂ ਸ਼ੋ ਫੇਸ 2 ਅਪ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੋਈ ਵੀ is equal to 1.6। therefore the probable number of dice, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫੇਸ 2 ਆਉਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1.6 ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ 36 ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਾਇਸ ਵਿਚ ਆਰ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਟੂ ਸ਼ੋ ਫੇਸ 2 ਅਪ
when 36 dice are thrown simultaneously equal to 36 multiplied by 1/6 equal to 6। मतलब एक्सपैक्ट करते हैं कि 6 डाइस जड़ियाँ 2 जोड़ा फेस है वो अप शो करनगियां जे आप 36 थ्रो करते हैं। नैक्सट प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। प्रायोरी मतलब प्री जंप्शन जी आप पहला ही प्री ज्यूम कर लें जिहदा कि जिहदे बेस ते प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। A priori we mean something which exists in our mind prior to its actual occurrence। एक्चुअल occurrence तो पहला जो साडे माइंड च पहला assume हो जाता उस दे नाल उस इवेंट के नाल रिलेटेड दैट इज़ कॉल्ड एज द प्रायोरी एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सपीरियंस। तो वह एक्सपीरियंस तो इंडिपेंडेंट। सपोज वी थ्रो अ डायस, नो देर इज़ नो लॉ ऑफ मैकेनिक्स विच कैन टेल अस इन एडवांस which face of the dice shall come up in preference to the other face। मतलब है सानू अपने पिछले जो भी ला है साडे मैकेनिक्स के वो नहीं दस सकते भी किहड़ा फेस जिहड़ा वो प्रैफर होएगा पाने लई, ठीक है। मतलब सारे फेसां की प्रोबेबिलिटी जिहड़ी है फेसिस की प्रोबेबिलिटी है वो सेम है, उन्हां विचों कोई भी जिहड़ा पा सकते। डज वी पोस्टुलेट अ प्रायोरी दैट इज बेस्ड ऑन previous notions or जी without any experimental experience, ठीक है। assumption दे बेस ते that the probability of any of the 6 faces appearing up is equal to। let us take another example। suppose we have a box, this is your, let us suppose this is your whole box, this is your whole box। it is divided into 2 compartments, that is equal sized compartments with this dotted line, that is this is compartment 1 and this is compartment 2। so we throw any object into this box targeting the middle line, any object or particle, the probability of entering the thrown particle or object in both the compartments is same, both are same sized, and this is called as the principle of equal a priori probability। इत्थे ने लिखा let a coin is thrown from a distance so that it may fall either in compartment first or the compartment second। now before throwing the coin we may think that the probability of entering the coin in compartment 1 is equal to the probability of entering the coin into the second compartment। thus this principle of assuming the equal probabilities for the like events is called the principle of equal a priori probability। मतलब जिहड़ा कि आपां लाइक इवेंट की प्रोबेबिलिटी जिहड़ी साडे कोल है हैपनिंग दी वो सेम है। दिस इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। see the next example। a box is divided into 20 equal sized compartments। a coin is thrown into the box is equally likely to go into any of these compartment। मतलब हुण जिद्दां तुहानूं पहिलां कि उपर 2 कंपार्टमेंट दे विच बॉक्स नूं डिवाइड कीता, हुण इत्थे एक बॉक्स नूं 20 इक्वल साइज्ड कंपार्टमेंट्स नूं विच डिवाइड कीता 20 दे विच, ठीक है। if 10 coins are thrown calculate the probability for a particular compartment to contain। इत्थे 3 केस है साडे कोल जिहड़े आपां फाइंड आउट करने। फर्स्ट इज calculate the probability for a particular compartment to contain all the 10 coins। second coin only 1 coin, and third case no coin at all। तो consider the first case।
A coin may enter into any of the 20 compartments. Therefore, the probability of the first coin to enter into the one said compartment is equal to 1 upon 20. Similarly, the probability of second coin to enter into the same compartment is equal to 1 upon 20. Therefore, the probability of the two coins to enter in the same compartment is equal to 1 upon 20 into 1 upon 20 is equal to 1 upon 20 square. Hence, the probability of all the 10 coins to enter in the same compartment is equal to 1 ਲਈ 1 upon 20, 2 ਲਈ 1 upon 20 square, 3 ਲਈ 1 upon 20 cube, and for all the 10 coins it is 1 upon 20 raised to power 10. This is the probability in the first case. Now in the second case की है, the particular compartment contains only one coin. थ्रो ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ करने all the 10 coins. कंटेन ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕੋ coin ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब है ਅਸੀਂ फस्ट ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ coin ਦੀ हैपनिंग ਦੀ probability ਲੈਣੀ है, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ नॉन हैपनिंग ਦੀ ਲੈਣੀ है, ठीक है। ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ नॉन हैपनिंग ਦੀ ਲੈਣੀ। The probability of entering coin into any of the said compartment is equal to 1 upon 20. The probability the second coin ਹੁਣ ਇੱਥੇ first coin entering ਦੀ ਹੈ, second coin ਦੀ ਕੀ ਹੈ not entering ਦੀ find out ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ not entering ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਣੀ ਹੈ and total entering plus non entering ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1 ਹੈ, ਤੇ non entrance ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਣੀ ਹੈ ਫਿਰ 1 upon 20 1 minus 1 upon 20 is equal to 19 upon 20. ये सेकंड दी होगी। फिर ऑल दी रेस्ट ऑफ दी 9 coins not entering into the same compartment, non entrance दी probability that is 19 upon 20 raised to power 9. तो फर्स्ट दी हैगी 1 upon 20 एंट्रेंस दी, तो नॉन एंट्रेंस दी बाकी 9 दी हैगी है 19 upon 20 raised to power 9. Therefore, the probability of any one coin to enter into the compartment is equal to 1 upon 20 multiplied by 19 upon 20 raised to power 9, ठीक है। raised to power 9 है इतने ऊपर। इन थर्ड केस की probability फाइंड करनी है contains no coin at all, मतलब सारी probabilities जड़ियाँ all for all the 10 coins non entrance की लेनी है। The probability of the first coin to miss the compartment मतलब non entrance की जगह लो 19 upon 20, second दी भी की होगी 19 upon 20, तो दो coin से कितनी होगी 19 upon 20 into 19 upon 20, and for all the 10 coins to miss the same compartment, that is for the non entrance, it is equal to 19 upon 20 raised to power 10. Okay. Next question is, a bag contains 6 white and 8 red balls. 3 balls are to be taken out of the bag one by one, मतलब in succession, by one by one in a random fashion. Calculate the probability of all the 3 balls to be red. So total number of balls कितनी है साढ़े कोल, red plus white कितनी है is equal to 14. तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनियाँ जड़ियाँ आप ड्रा करनी है या पिकअप करनी है इक्वल टू कितनियाँ 8 है। तो जो आप फस्ट बॉल आप पिक करांगे वो प्रोबेबिलिटी रेड होने की कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फस्ट बॉल टू बी रेड इक्वल टू 8/14,
This is 4.7. In second case, the total number of balls in the bag is equal to left equal to n equal to 13. क्योंकि 14 से पहला एक ड्रा कर ली तो बचियाँ कितनी 13 तो रैड चो भी घट जानी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉल्स जी रैड लैफ्ट है वो कितनी 7 है। तो प्रोबेबिलिटी फॉर द सैकेंड बॉल्स टू बी रेड इक्वल टू 7.13। सिमिलरली द प्रोबेबिलिटी ऑफ द थर्ड बॉल टू बी रेड इक्वल टू एक दोनों पासे घट जाना 6.12 इक्वल टू 1.2। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द 3 balls टू बी रेड बी इक्वल टू 4.7 7.13 multiplied by half equal to this one. This is the required answer.